same-store sales growth last year was 13.6%, and it was double-digit across all our three businesses: apparel, GM, and FMCG. And I can very briefly tell you, even in the first half of the current financial year, our business continues to grow at double-digit same-store sales growth, and again across all our three businesses: apparel, GM, and FMCG. Yes, there are new competitors who are there in the market, and there will be new competitors coming into the market in the future also. But ours is a very differentiated business. For example, even in FMCG, as I mentioned in my presentation, more than 50% of our volume is coming from our own brands, and those are very differentiated. I'll just give you two examples to see how that works. Our chocolate cream biscuit, which is made by an Australian multinational company called McVitie's, we sell at 16 rupees. The other chocolate cream biscuits which are available in the market from other companies, the market leaders included, which other retailers sell, are for 36 rupees. So even if somebody is discounting that 36 by 20%, the price of that becomes 28-29 rupees. It is still almost double for my customers. Similarly, our noodles, 70-gram noodles, where Maggi has a price of 16 rupees, our noodles, which are made by Indonesian Noodles, which, as you would know, is a Japanese multinational company, are available at 9 rupees. So our customers, if they were to go at any alternate platform and buy these categories, they find that they are paying a huge premium over what the prices they are charged in the Vishal store. So to the best of our knowledge and understanding, we have not lost any customers to anyone. And as I mentioned, we are very encouraged by the early results from our quick commerce platform. It was started as a pilot last year for the first time, so it's still very early days. And we are finding that the response from the current Vishal users and from the users who are not with Vishal, both has been encouraging. And we remain very optimistic about that. So going ahead, do you plan on increasing the online more than the offline? Any guidance on that? I wouldn't say that, because our offline business is growing very rapidly, both in terms of same-store sales growth and the new store expansion. It would not be our plan to slow it down in any particular way. We would give our best shot to both the channels, and they will find their rightful place in terms of contribution. Another question I had, when it comes to the inventory days, so any number on, what it is, and also what is the churn there, like how often do you churn? And this is especially for apparels, because other players, if you look at it, the churn is very high. So that's why, they are able to get good growth there. So any idea on that, any number on that? So ma'am, firstly I would tell you that we have grown in apparel again at double-digit sales growth, and even in the last quarter, which is the quarter which has just ended, that I would submit to you is market-leading performance in apparel. Secondly, the number that I would request you to look at is our NWC days. For example, in Amit's presentation, you may have noticed that our NWC days are 11 days, which is by far the lowest in Indian retail industry. It only indicates that we are churning our inventory, including apparel, much faster than anyone else. Thank you. Thank you. We have an online question. आप महाराष्ट्र और गुजरात में कब एंट्री करने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग केरला में स्टोर खोलना शुरू किया है, तो पर मैं क्लैरिफाई कर दूं, जब केरला में खोल रहे हैं तो बाकी सब देश के भागों में भी खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सब जगह नहीं खोल रहे, जैसे दिल्ली NCR में खोल रहे हैं, बैंगलोर में खोल रहे हैं, पर केरला हमारे लिए नई राज्य है जिसमें हम लोगों ने अपनी प्रवेश किया है।
तो हम जहाँ पे भी स्टोर खोलते हैं बहुत बहुत बड़ा क्लस्टर में खोलते हैं ताकि सप्लाई चेन ऑपरेशन सब एफिशिएंट हो जाए जल्दी और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए जल्दी। तो अब इसके बाद हमारे पास 3 स्टेट्स बची हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है अभी, वो है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन 3 स्टेट्स में भी जब हमने केरला में अपना काम समाप्त किया उसके बाद इमीडिएटली हम जाने की एक करके यही हमारा प्रयास है। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगले 2 साल में हम लोग शायद नेक्स्ट में एक्सपेंशन करना शुरू करें। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आप बम्बई में कब आएंगे? जैसे ही हम लोग मुझे लगता है कि महाराष्ट्र आएंगे तो मुंबई में तो उसके साथ आएंगे, हो सकता है मुंबई से शुरू करें। यस प्लीज मैडम माइक। Sir, are you planning to go for the interior part of the country because everything we are getting in the main cities? But what about the setup is? You want to go for the interior parts of the India? Tier 2, Tier 3, Tier 4. Very important, ma'am. I just repeat one number, which I don't know if I covered very well in my presentation. 70% of our stores, 70%, are in Tier 2 towns and towns which are smaller than Tier 2. Even today, our first attempt would be to cover all the towns in India which have more than 50,000 population. Right? That is clearly the plan which I showed. But as we speak, we are experimenting with formats which can go even bigger. So it is our ambition, absolutely yes, and we are finding the right format to take us deeper into India. So, by the grace of God, we should be going deeper also very soon. हेलो कपूर जी, आपने लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बताया, उसमें हर साल कितने कस्टमर एडिशन ग्रोथ कितना होता है? आपने लॉयल्टी प्रोग्राम, हाँ जी, फिर से एक बार प्लीज मेरे लिए प्रश्न रिपीट। लॉयल्टी प्रोग्राम जी, जो आपने मेंशन किया था उसमें हर साल कितने कस्टमर एडिशन होता है? हर साल कितने कस्टमर ऐड होते हैं, एडिशन होता है? ये हमारे साथ कार्तिक साहब बैठे हैं जो हमारे CIO हैं, ये लॉयल्टी प्रोग्राम के भी मालिक हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपको बताइए। and that's a query from Vishnu Bhardwaj, Navbharat newspaper. देखिए पिछले क्वार्टर में हमने 13.4 माइनस 12.9 50 लाख कस्टमर बने हैं। पिछले क्वार्टर में नंबर से बोल पाते क्योंकि Q1 में हमारे 12.9 करोड़ थे, Q2 में और Q2 में 13.4, तो 50 लाख जो है एक क्वार्टर में ऐड हो गए हैं। तो इस स्पीड से हमारी ऐड आज की तारीख में कितने हैं? आज की तारीख में हमारी टोटल रजिस्टर्ड कस्टमर है 13.4 करोड़। 4 करोड़ 2 साल पहले कितने रहे? सॉरी 2 साल पहले 2 ईयर बैक 2 ईयर बैक Approximately. प्रेजेंटेशन में यू कैन हेल्प होता है। फ्यूचर गाइडेंस तो कुछ दे नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अलाउड नहीं है, पर ऑब्वियसली कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि सब अच्छा हो। Right. There is a, before I take the query here, there is a online query and the online query says कि आपका कंपैरिजन हम डीमार्ट से या किससे करें और कैसे करें? देखिए, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि हमारी कैटेगरी मिक्स यूनिक है, इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारा ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन आप जो अदर रिटेलर हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो अच्छा है ज़्यादा, क्योंकि 75% हमारा रेवेन्यू हाई मार्जिन कैटेगरी से आ रहा है। तो आप हमें कंपेयर एक्चुअली में कोई ऐसा रिटेलर है नहीं जिसके साथ आप कर पाएंगे हिंदुस्तान में, पर दुनिया में ऐसे रिटेलर्स हैं जो अपैरल भी करते हैं और फूड भी करते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं दुनिया में।
पर हिंदुस्तानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समवट यूनिक है इस तरीके से अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और वही हमारी जो कम्पिटिटिवनेस है उसका एक वेक्टर ये भी है कि हमारी कैटेगरी मिक्स हो। एक क्वेश्चन है कि एक वित्तीय वर्ष में ये कहना चाहूँगा कि आज हमने आईपीओ की प्राइस अनाउंस की है जो है 74 to 78 रुपीज़ की रेंज में। आईपीओ खुलेगा दिसंबर 11 को और चलेगा दिसंबर 13 तारीख तक। तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि इसमें हमको सबका सहयोग मिलेगा और ये आईपीओ सक्सेसफुल है। ये विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डी मार्ट एंड योर्स? देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ तो यह है कि हमारी जो कैटेगरी मिक्स है वो बहुत यूनिक है। हमारे रेवेन्यू का करीब 50% अपैरल से आता है, 25% जनरल मर्चेंडाइज से आता है और 25% एफएमसीजी बिजनेस से आता है। दूसरी यूनिक चीज़ ये है कि हमारे बिजनेस का 74% रेवेन्यू हमारे खुद के ब्रांड से आता है, जो हमारे प्राइवेट ब्रांड्स हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो कस्टमर हैं उनकी एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब इंटरनेट की पेनिट्रेशन इंडिया में करीब 100 करोड़ लोगों की है, तो उनकी आकांक्षाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो लोग वो चीज़ें खरीद नहीं पाते। हम हर समय यही प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने प्राइवेट ब्रांड्स के थ्रू उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको अफोर्डेबल बनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि आपने कहा 645 स्टोर हैं और 1300 और आने वाले हैं, तो ये कब आएंगे और इसका शुरू करने का पैसा कहाँ से है? तो दूसरा क्वेश्चन मैं पहले आपको आंसर करता हूँ कि हमारे पास इंटरनल अक्रूवल्स हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है जो कि मोर देन सफिशेंट है हमारे हर ग्रोथ एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारी कंपनी पूरी डेट फ्री है और आज की डेट में हमारी बैलेंस शीट में भी हमारे पास पैसे हैं जिनको यूज़ करते हुए और अपने इंटरनल अप्रूवल्स को यूज़ करते हुए हम अपने जो भी ग्रोथ की एम्बिशन है उसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। सर, एक रुकिए ना।